Hello everyone. Can you all see me? Guna? Yes, Anthony, you're visible. Okay, so let's start the session. Hello everyone. Welcome to Android Study Gems. A bit intro about me. My name is Shantan Banerjee. I'm currently in my third year in the IPG MTech batch. I was involved with Android development over the last 1.5 year. I backed a couple of startup internships with Android and also contributed to open source with the same. So now, what does these study gems are all about? So Google actually took this initiative to spread Android knowledge to the community. Now, what they did is they took facilitators from each DSC club and assigned them the responsibility of hosting sessions in their respective communities. And in our case, it's me. So this program is being held worldwide over more than 300 DSC clubs, and we can be truly proud of ourselves to be one of them. So in the chat section, please don't spam. Okay, stop responding like yes, no, etc., etc. If you're having any doubts or something isn't clear, please write it down in the chat box. And I have a friend of mine, Manik Malhotra. He's doing Android for over a year now. He would be taking your queries and respond it in the chat box at his own pace. Okay. Somebody asks, will you record this session? Yes, the session is being recorded and we will upload to YouTube also later on for your view. I understand that this is your first technical session after enrolling in our institute. So there isn't any prerequisite as such. But एक चीज है जो मुझे तुमसे चाहिए, ठीक है? And that is attention. So मुझे तुम सब से 100% attention चाहिए. And having said that, please put your mobile phones in silent mode or do not disturb mode. Now it is not compulsory, but if you want to really focus, please do that right now. I will wait for 10 seconds. Somebody asked, will you start from basics? Yes, Nidhi will be starting for basics only. Okay, so moving ahead. Some people are in a habit of taking notes while listening to lectures. So I want to just tell them this session would be recorded and would be uploaded on YouTube. Okay, so you can always go back and watch if some part isn't being cleared. So my suggestion would be don't take any notes in between the session. Just listen now and we will share all the resources in the end. Notes तब ले लेना, in between sessions notes मत लो, ठीक है? एंड फाइनली आई वांट टू टेल समथिंग दैट मैं कोई बोरिंग सा प्रोफेसर नहीं हूँ जो पढ़ा के चला जाऊंगा. मैं बहुत इंटरेक्टिव करने वाला हूँ. एंड सो फॉर दैट वी वुड बी टेकिंग polls. Now what I'm going to do is I am sending a link in the chat box. Everyone please join that link. If you're using laptop, please open it in another tab, or if you're using mobile also, please open it in another tab. Okay. So currently in that, I am launching a poll. Please answer that. I launched a poll. Which batch are you from? Please answer that. Everyone. Guna, can you see my screen? Yes, Anthony. Okay, great. So I can see 125 votes are casted, and IPG MTech is most and is expected. So yeah, I am closing the poll now. So you understand now that how the polls are going to happen. So like this, I will be taking polls on frequent basis. Please answer that. Okay. So now let's start. Okay. So what are the prerequisites of these sessions? So the first prerequisite is basic math skills.
And by this, I'm not referring to those calculus or differentiation you learned in 11, 12. Basic math skills include addition, subtraction, division, multiplication, and modulo. If someone's wondering what modulo is, it is actually the remainder you get after dividing two numbers. So, for example, 5 modulo 2 would be 1 because the remainder we get after dividing 5 by 2 is 1. Okay. The next is computer is specifically a good processor and a good RAM content. For that, I would suggest that 4 GB is the minimum RAM preferred and 8 GB is 4 GB is minimum and 8 GB is preferred. And for processor, I think i3 is minimum and i5 and i7 is preferred. So if you don't have any laptops currently, you are planning to buy one, please buy a good quality laptop. I think around 50,000 or 60,000, you will get a good quality laptop. So please buy that and make sure it functions properly. Number third is internet connection. So it is actually required when you are compiling and running stuffs in Android Studio, the place where we run code. Okay. So a good, stable, and proper internet connection is required. And for number fourth is Android devices and USB cable. So after you're developing stuffs on Android, you need to test the application, right? So for that, you need an Android device. And if you don't have an Android device, if you don't have an Android device, I will tell you how to install an emulator and run your code on the emulator itself. But emulator is a pretty heavy software. It actually kills the RAM. मेरा लैपटॉप बहुत बार हैंग हो चुका है एमुलेटर यूज करते हुए मैं एमुलेटर छोड़ दिया हूँ so if you're using an emulator make sure your laptop is capable of doing that so okay now I will be launching number 2 poll. Everybody please go and mark your answer there. Which type of phones are you using? Android, iPhone, or Windows phone? I will wait for 10 to 15 seconds. Wow, Android phones 92%, iPhone 8%, Windows phone as expected 0%. See, that's the main reason we are here. Android phone are so much, it's so much in the whole world that learning Android development is very crucial or it's very demanded, what we can say, because the share percentage is huge. So I'm actually closing this poll. It's 92% Android phones. Okay. Now I have to moving ahead. So overview of the study jams, how the study jams are going to be held. Okay. This is the link. The link. All these links I will share with you at the end of the session in a resources doc. So don't worry, you will get each and everything. So this is the first link which you will join, and when you will join here, you will get your first badge. What are badges? I'm coming to that. Then these study jams actually consist of two tracks or courses. This new to programming track and have prior experience programming experience track. As we are all new to programming, so we are choosing this only new to programming track. Next, after we visit that track, you will see this Android basics in Kotlin course. So what we're going to do is we will be studying this course basically, Android basics in Kotlin course. In this course, we are having 2 units, and each unit is having some pathways. If you are confused, I will show you. Just hang on a bit. Okay. This is the first unit. In it, it has. Wait a minute. This is one pathway, this is one pathway, this is one pathway, this is one pathway. So there are total 4 pathways. Okay. There are total 4 pathways. What are these pathways? I am coming to explaining. Now, after you open one pathway, it will come like this. So what are these pathways? So it's an ordered sequence of, wait a second. Uh, So what is a pathway? It's an ordered sequence of activities to learn a specific skill. An activity can be a video, coding tutorial, or known as code lab. And last, and at the end, it will have a quiz. Okay. So finally, after taking the pathway, you have to answer few questions on based of a MCQ quiz,
And after passing this quiz, you will be awarded a badge. Like this, you will be awarded a badge. Okay. And these badges you can display on your Google developers profile. So if it's all theory, I will just show you everything how this is done. Let me visit the link itself. Someone has just typed out that we are not audible. Could someone else confirm if we are audible or not in the chat? Because for us, the sound is pretty clear. So it's audible, right? Okay, great, great. So I am moving forward. So this is the thing actually, when you are clicking on that link, this is the thing, this new to programming track and prior programming experience track. So we will be choosing this new to programming track. So let me just click on it. In this track you are seeing there are two units. Unit 1, which have 4 pathways, that means 4 badges. And unit 2, there are 2 pathways, that means there means 2 pathways. Now in this unit 1, as you can see, there are 4 pathways. Let me click on this first pathway. In this you can see that there are videos. You can watch this video, it's optional although. In this video, after that, the main thing is this code lab. You have to take this code labs are what? It's an ordered sequences of instruction you need to follow to get your stuff done. So it's a written actually. This is, you have to read this, and then it will tell you how to set up your Kotlin playground, then how to write code. It has stuff like this. So don't worry, we will be covering all of this. You just have to after today's session, you just have to complete this code labs, and then at the end there is a quiz. You have to take this quiz, and then there are some questions. Can you all see this? There are some questions. In these questions, after marking them correctly, maybe there are 6 questions, so if you mark 5 correctly, you will get the badge. And if you tell how what we can do with these badges, let me show you that. This is Google developers profile. I'm opening my profile. Just hang on. You have to sign in, and you have to choose your account actually. So can you see these badges? So these are all the badges I've earned so far. Total I have total badges under 21. Currently this whole profile system is in beta version, so it's private to me, but they are planning of making this public soon enough. And once it is public, you can show these badges to others also. For now, you can take a screenshot of it and you can post it in LinkedIn or whatsoever you find it's necessary. Okay, so this is the whole workflow of how the study jams are going to perform. Now let's dive into today's session. Let me close all this. Okay, so let's dive into today's session. So today we are going to cover these 3 pathways. This pathway 1, pathway 2, pathway 3. This pathway 1 is all about, see, this is the 3 pathways: introduction to Kotlin, create your first Android app, and build a basic layout. We'll be building a very basic layout like this, and each of these pathway have a badge. So you have to pass quiz in each of them, and then after passing the quiz, you will earn this badge of these 3 badges. Okay. So pathway 1 is all about using Kotlin to start writing Android apps. So you will learn very basics of Kotlin and very basics of programming. I'm assuming you don't know anything about programming, so I will start from very basic. We will be writing about code in Kotlin Playground. It actually gives us the flexibility to write Kotlin codes. Okay. The next pathway would be Android Studio, this official tool to build Android apps. This is the Android Studio where we write and build Android applications.
So all those installations and stuff we'll be doing in pathway 2. And the last pathway would be the part of the app where the user interacts with it. So mainly the layout building, just small layout building type stuff we'll be doing to it. So very basics and all. Layouts app, text view, image view, button. Don't worry if you don't understand it. We will go in very detail in when the time comes. Okay. So let's get started. Pathway 1, Introduction to Kotlin. Now, what is Kotlin? Before diving into Kotlin, I want to ask you another poll. Please go and come poll it. I'll wait for 15 seconds. It is about your level of programming experience. Do you know from beforehand or you don't know it? You're a complete beginner to it. And please be honest. Okay. 90 votes casted. Majority of just started recently means थोड़ा कम आता है. 35% complete noob, and few people also means have prior experience from beforehand. So I won't be considering these people who have prior experience from beforehand. I'll be considering the people who are complete noob to programming. So this is a very starting point, and you don't have to know anything from beforehand. Just be attentive. Okay. So now let's move ahead. Okay, let me close this poll. So what is Kotlin? So Kotlin is a modern programming language that helps developers be more productive. It was started as a project by JetBrains in 2010, and then it got its first release version by 2016. So you can see 6 years it took to be first released version to be formed. 6 years. And after that, Kotlin skyrocketed. It grew exponentially. Let me tell you after that what happened after 2016. By 2017, Google announced Kotlin would be another officially supported language on Android. Before Kotlin, Android was supported by Java. So Java was booming for 6 to 7 years consecutively. After Kotlin came, Google announced that okay, Kotlin has provided very flexibility and very good features. Why not make it another official language for Android? So Kotlin was became official language for Android on 2017, and by 2019, Android is declared Kotlin first. Now, what is meant by Kotlin first? Any tools, any tools, any libraries, any packages which are being developed on Android version, it will be first released in Kotlin, and then it will be released in other versions like Java or something else or C++. Okay, so by 2019, Android development is made Kotlin first. So let me give you my example. मैंने Android development शुरू किया था 2019 मई में. तब मैं जावा से शुरू किया था. लेकिन 1 साल में जावा करने के बाद मुझे 1 हफ्ता लगा था जावा से कॉटलिन में शिफ्ट होने के लिए. And once you shifted, there was no point of looking back. It's so good actually. So let me tell you what makes the benefits of Kotlin. Okay, the first point is expressive and concise. So बहुत कम लिखना पड़ता है बहुत ज्यादा कुछ बोलने के लिए. So boil reduces the amount of boilerplate code. The second point is safer code. बहुत तरह के एक्सेप्शन आते हैं हम लोग जब एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं, तो ये बहुत कुछ अपने अकाउंट में ले लेता है एंड बहुत सेव कर देते हैं. सो इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर्स लाइक null pointer exception. If you don't understand it, don't worry, you will understand later on. Number third is, this is the most important point, interoperable with Java. Before Kotlin, Java was the primarily Android development. Java was used for primary Android development for 6 to 7 years. So if now they have to shift to another language, do they need to write completely? Do they need to change the code base to write Kotlin? The answer is no. जावा में जो चीज लिखे हो वो तुम कॉटलिन से कॉल कर सकते हो. कॉटलिन में जो चीज लिखे हो वो तुम जावा से कॉल कर सकते हो. तो जावा और कॉटलिन एक साथ चलता है. So this is a very nice point which is offered by Kotlin. And number fourth point is structured concurrency.
बैकग्राउंड वर्क को बहुत अच्छे से हैंडल करता है कॉटलिन। अब बैकग्राउंड वर्क क्या होता है वो तो तुम एंड्रॉइड डेवलपमेंट जब करोगे तभी समझोगे। अभी के लिए जस्ट समझ के रखो कि स्ट्रक्चर कंकरेंसी बहुत ही अच्छा फीचर है कॉटलिन का। एंड अकॉर्डिंग टू स्टैक ओवरफ्लो सर्वे 2020 का, Kotlin is declared as the fourth most loved programming language in the world. Number fourth, after I think Rust and Python and like that. Okay. So now this is the first time you're looking at a Kotlin code. 70% didn't know anything about programming, right? So this is the first time you're looking at a code. Now I'm just telling you to guess something. What does this code do? And obviously we will do another poll. Please cast your answer. What does this code do? Okay, so 82% says it shows output hello world. 8% ये भी बोलते हैं कि वर्ल्ड वर्ड को ट्रिगर कर देगा। चलो सही है। चलो ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इसको मैं अब क्लोज कर देता हूँ। सो ये जो प्रोग्राम है इसको अच्छे से समझते हैं कि ये क्या करते हैं। एंड ऑब्वियसली ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। इतना सा कोड में बहुत कुछ है, ठीक है। So there are many things to talk about in this small code, 3 lines of code. The first is every function starts with the word fun in Kotlin. Just a minute. Yeah, can you see this word fun? Every function starts with the word fun in Kotlin. अब तुम लोग बोलोगे फंक्शन क्या होता है, तो मान लो वैक्यूम क्लीनर क्या होता है, तो वैक्यूम क्लीनर का काम होता है साफ करना। टोस्टर का काम क्या होता है, वो ब्रेड्स का टोस्ट बनाता है। तो किसी भी चीज का क्या काम होता है उसके मतलब है फंक्शन। तो फंक्शन दो तरह की होता है, वन यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड दूसरा प्री डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड क्या फंक्शन क्या होते हैं वो हम लोग आगे बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। देयर इज वन वेरी स्पेशल फंक्शन व्हिच एवरीवन शुड नो, दैट इज मेन फंक्शन। because code execution starts from the main function in every generally in every programming language, वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, कॉटलिन हो, तो मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन के अंदर की जो चीजें होता है वो लिखना पड़ते हैं, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन मैंने एक नाम दे दिया कॉटलिन में, उसको एक फन वर्ड दे दिया उसको बोलने के लिए कि एक फंक्शन है, और फिर इसको एक कर्ली ब्रैकेट से उसे खोल दिया और बंद कर दिया। तो इसका मतलब है इसका अंदर का जो चीजें लिखूंगा वो मेरा जाके एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसमें मैं क्या लिखा हूं, प्रिंट एल एन हेलो वर्ल्ड। एल एन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन। तो मतलब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा और एक नया लाइन में चला जाएगा। एंड अगर तुम लोग कोई नोटिस किए हो तो देखोगे यहाँ पे कुछ सेमिकोलंस नहीं है। ठीक है, सी प्लस प्लस में जावा हर स्टेटमेंट के बाद सेमिकोलंस डालना पड़ता है। पाइथन में नहीं पड़ता, कॉटलिन में नहीं पड़ता, कॉटलिन में नहीं पड़ता, ऑप्शनल है। अगर डालोगे तो एरर नहीं फेंकेगा लेकिन ऑप्शनल है। तो मैं इसको कॉटलिन प्लेग्राउंड में रन करा के तुम लोग को दिखाता हूँ। ये कॉटलिन प्लेग्राउंड है, इसमें तुम जाके कोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराया तो दिखा हेलो वर्ल्ड आया। ठीक है, किसी मैं पोल करता हूँ, रुको। पोल पे आंसर कर दो। ओके ग्रेट, 95% नो ऑल क्लियर। जो 5% यस बोल रहे हैं मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये फंक्शन होता है कॉटलिन में, फंक्शन मेन से स्टार्ट होते हैं सब कुछ, और मेन के अंदर जो लिखते हैं वही जाके प्रिंट होता है, मतलब वही जाके काम करता है, कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो अब जाके मैं कोड लिखता हूँ, प्रिंट
सब लोग कोड देख पा रहे हो ना? हाँ, तो इसमें से मुझे बताना है कि इसमें कितना लाइंस आउटपुट होगा जब इसको मैं रन करूंगा इस कोड को अभी। ठीक है, तो मैं एक पोल करता हूँ फिर से। हेलो सैंतन। हाँ, जब कोड दिखा रहे हो, could you please zoom in a bit? It's not very clear. Like if you zoom in a bit, it will be clear. ओके, आई विल Okay, ट्राई। I will try. Thank you. तुम लोग पोल पे आंसर कर दो। देख पा रहे हो ना अभी? ओके, तो मैं आंसर देख लेता हूँ अब। 78% बोल रहे 3, 9% बोल रहे 1, 4 लाइन्स बोल रहे 10%, एंड फ्यू पीपल डोंट नो। वाओ। Okay, so yeah, you are right. Three lines will be printed because print ln. What I told is print ln means it will print on a new line. Okay, I was running it. You can see hello world. We are on an Android study jam session. Session is very boring. Okay, so let me just cross it. Okay, so after print ln, let me change two of these lines to print. Okay, now tell me how many lines it would form. Wait, I'll now tell me how many lines it would be output. It would give output. There are two print. There is one println. Please cast your vote. Just think for a little bit. It's not that hard. Okay, again, one is 21%, two is 76%, two 74%. So I'll be closing this poll. Yeah, the right answer is as told by the majority person. See what happens. Hello world, there is print. So no new line. Okay. So from world only, after that world, this statement is begin starting. We are on Android study jam session. But this statement have one println. So what happens? This session is very boring. So this comes in the third line. Okay. So we are having actually two lines of code. So that's how that's starting. Now let's move ahead. So you guys just gave JE and came in the college, right? So you must be remembering this very famous formula F equal to mass into acceleration. So if I say you the mass of a car is 10 kg and acceleration is 10 meter per second square, so what will be the force? You will just multiply those two, right? 10 kg into 10 meter per second square, it will be 100 Newton, right? Now, how to program this? The main logic is how to program this. So if I tell you something, first understand what are the variables in Kotlin. Okay, so variables are used to store information to be variables are used to hold data. मान लो हम लोग जब हम लोग मैथ्स करते थे, हम लोग लिखते थे ना y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तब हम लोग कुछ लिखते थे एक्सप्रेशंस y इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2। तो उसमें y और x क्या होता था? इन द एंड उन लोग एक 2D कार्टेशियन प्लेन में कुछ वैल्यू होल्ड करता था, कुछ भी रियल एक वैल्यू होल्ड होल्ड करता था। उसमें x में हम लोग कुछ वैल्यू डालते थे, मान लो 2 डालते थे, उसमें हम लोग कंप्यूट करके y का वैल्यू भी निकाल सकते थे और फिर प्लॉट कर सकते थे, राइट? तो इसमें भी क्या होता है, जो मास है, एक्सेलरेशन है, एक सब क्या है, एक वेरिएबल्स हो गया जिसमें कुछ वैल्यू होल्ड करता हो। तो हम लोग इसी चीज को वेरिएबल से डिफाइन करते हैं कॉटलिन में। वेरिएबल्स फिर क्या है? जो वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है, मैं इसके लिए पोल डाल देता हूँ ताकि तुम लोग सब क्लियर हो और हम लोग एक ही पेज में है।
सो मैंने पोल डाल दिया, तुम लोग जाके आंसर कर दो। 10 सेकंड रुकता हूँ। ओके, 86% बोल रहे विच होल्ड डाटा, यस। तो वेरिएबल्स कॉटलिन में वही होते हैं जो वैल्यू को होल्ड करता है, ठीक है। तो अभी जाके हम लोग इसका कोड करते हैं, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सलेशन, इसका कोड लिखते हैं, ठीक है। पहले मैं बोलता हूँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मास, जो मैं बोलता हूँ 10। और फिर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एक्सलेशन, इसको मैंने वैल्यू दे दिया 12। फिर मैं बोलता हूँ फोर्स, क्या होगा, मास इंटू एक्सलेशन होगा। अब मैं बोलता हूँ प्रिंट कर देता हूँ ये एक्सलेशन के वैल्यू, फोर्स की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या होगा। तो 120 आ गया ना, 10 into 12 हो गया, तो 120 आ गया। तो वेरिएबल यही होता है कि जो तो वेरिएबल यही होता है कि जो कोई वैल्यू को होल्ड करे। अब कॉटलिन में ना दो तरह की वेरिएबल है, एक होता है वैर, एक होता है वैल। ये जो तुम देख लो ना यहाँ पे वैर, ये दो तरह के होते हैं। मैं इसको वैर को चेंज करके वैल कर सकता हूँ। तो दोनों में अंतर क्या है। वैल वो होता है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, वैर वो होता है जो वैल्यू चेंज होगा। अगर कंफ्यूज कर रहा हूं तो मैं इस पर स्लाइड्स पे दिखा देता हूँ। वैर जो होता है ना, वो म्यूटेबल होता है, उसके वैल्यू तुम चेंज करते हो। ये जो काउंटर है ना, काउंटर चेंज हो सकता है। और जो वैल होता है ना, वो तुम प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते हो। अगर तुम चेंज करने जाओगे तो एरर फेंकने जाएगा। तो मैं, मान लो इस प्रोग्राम में अगर मैं अपने कार का फोर्स निकालना चाहता हूँ, मेरा कार के तो मास तो चेंज नहीं होगा ना। एज्यूम कर लेते हैं कुछ उल्टा सीधा नहीं हो रहा, तो मास तो कभी चेंज नहीं होगा। एक्सलेशन चेंज हो सकता है अपने स्पीड वेलोसिटी के ऊपर, एक्सलेशन डिपेंड कर सकता है। तो हाँ, तो मास तो कभी चेंज नहीं होगा ना, तो मास को मैंने वैल कर दिया, क्योंकि मास की जो वेरिएबल है, ये मास कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो एक्सलेशन ऑफ फोर्स है, ये चेंज कर सकते हैं, ये वेरी कर सकते हैं। तो मैंने इसको वैर वैर रख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो सेम ही आउटपुट मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज करते देखता हूँ, मैं मास को चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं मास को वैल करके रखा हूँ, मैं मास को चेंज किया, तो मैं रन करके देखता हूँ। तो रन करके देखा कि वैल कैनॉट बी रीअसाइंड। तो वैल चेंज नहीं होता है, मतलब वैल की वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो जस्ट तुम लोग को थोड़ा आइडिया देने के लिए, वेर और वेल जो है कॉटलिन में है, ये चीज कॉटलिन में है, सी और सी प्लस प्लस में नहीं है। सी और सी प्लस प्लस में एक ही तरह की है। सी और सी प्लस प्लस में ये वाला चीज, वेल वाला चीज करने के लिए उसमें कॉन्स्ट यूज करना पड़ता है। तुम लोग जब कॉलेज में पढ़ोगे तब समझ जाओगे। लेकिन कॉटलिन में अलग से बोल के रखा है वेर और वेल। तो मैं जस्ट चेक करने के लिए एक बार पोल कर देता, एक नया पोल लगा देता। ताकि आंसर कर दो। ओके, सो मैं आंसर देखने आ रहा था। which value changes in variable Kotlin, var होता है 95%, ठीक बोल लो। val नहीं होता, both नहीं होता। val में constant रहता है, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। मैं वही जो एफ इक्वल टू एम ए का जो प्रोग्राम है, मैं इसको डाल कर रखा हूँ, तुम लोग बाद में देख सकते हो। ये पीपीटी शेयर हो जाएगा। एंड ये हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इसको हम लोग फिर बाद में जाके यूट्यूब पे डालेंगे। तो तुम लोग कहीं पे या कुछ मिस कर रहे हो कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तुम लोग हमें पीछे जाके तुम देख सकते हो फिर से। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, जस्ट वेट अ मिनट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर डेटा टाइप्स। तो कॉटलिन में कुछ तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे हम लोग इंटीजर, पहले पहला डेटा टाइप होता है इंटीजर, जिसमें इंटीजर वैल्यू होल्ड होता है। इंटीजर वैल्यू मतलब -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, जो इंटीजर वैल्यूज है, इंटीजर वैल्यूज होल्ड होता है।
द नेक्स्ट डेटा टाइप इज डबल। डबल में क्या होता है, जो रियल डेटा टाइप होता है, मतलब रियल वैल्यूज होते हैं जिसमें 9.8, 7.2, 1.4567, 3.1452, ये जो वैल्यूज होते हैं वो डबल में होता है। इंट डबल। नंबर तीसरा जो होता है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या होता है, वो हम लोग कुछ मैसेज लिखने के लिए या फिर कुछ टेक्स्ट सेट करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करते हैं। ओके। चौथा जो डेटा टाइप होता है वो होता है बुलियन। मुझे जो प्रोग्रामिंग नहीं जानता उसके लिए नया होगा, क्योंकि बाकी तीनों से तो फेमिलिटी हो गया तुम लोग को, मतलब मैथ्स में पढ़ चुके हो। स्ट्रिंग्स तो तुम लोग यूज करती हो, मतलब टेक्स्ट तो यूज करती हो। एंड द लास्ट थिंग इज बुलियन। बुलियन क्या होता है, इसमें दो तरह की वैल्यू लेता है, एक ट्रू लेता है एक फॉल्स लेता है। प्रोग्रामिंग में बुलियन बहुत यूज होता है, मैं आगे आगे डिस्कस करने वाला हूँ, मतलब डिस्कस करूंगा कैसे यूज होता है। लेकिन ये मतलब ये मान के चलना, बुलियन डेटा टाइप बहुत यूज होता है, ठीक है। तो जस्ट डेटा टाइप्स के ऊपर ही एक ऊपर डेटा टाइप्स के ऊपर पोल लेने से पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता। यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन नहीं किया कहीं पे, क्योंकि कॉटलिन में ना खुद से समझ जाते हैं कौन सा टाइप की डेटा टाइप है। अब मान लो मैं मास को यहाँ पे 10 किया, 10 क्या है, इंटीजर है, तो मास को ना उन लोग इंटीजर बना दिया। अब मैं मान लो मैं मास को कुछ ABCD करने गया, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। मैं ABCD करके उसको स्ट्रिंग बना दिया। अब प्रिंट करता हूँ मास, तो देखते हैं क्या होता है। देखो, जब मैं वैर को डिक्लेयर नहीं किया था मास, वैर को मैं इंटीजर डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन जब मैं उसको 10 असाइन किया था ना, वो मास को मतलब इस वेरिएबल को 10 कर चुका है, मतलब इंटीजर कर चुका है। लेकिन अब मैं मास को ABCD करने गया, तो स्ट्रिंग करने गया, तो अब नहीं होगा। एक बार कुछ दे चुके हो तो अब नहीं होगा। तो बेटर क्या रहता है, हमेशा ये मेंशन करना जब भी वेरिएबल यूज करो उसका डेटा टाइप क्या है। जैसे इसका डेटा टाइप है इंट, एक्सप्रेशन का डेटा टाइप क्या है, डबल, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब मान लो ऐसा हो रहा है 12.6। फोर्स का क्या होगा, डबल के साथ अगर इंटीजर मल्टीप्लाई होगा तो डबल ही होगा। अब जाके मैं मास को हटा देता और फोर्स को प्रिंट करता, तो देखे ना 126 आ रहा है। मैं इसको 5 ले रहा हूँ, तो देखता हूँ कैसा आता है। 63.0, ठीक है। 3 पे होगा ना, 4 पे, 4 करके देखता हूँ, तो 50.4। तो ये भी डबल डबल इंट, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पोल लेता हूँ, एक सेकंड। या मैं पोल कर दिया, तुम लोग अब जाके आंसर कर दो। आंसर कर रहे हो? तो हाँ, रियल में 95% का लोग बोले रियल। हाँ, तो रियल नहीं है। रियल जो नंबर्स होते हैं वो हम लोग डबल में यूज करते हैं, ठीक है। इंटीजर इंटीजर नंबर्स के लिए बुलियन बुलियन, ट्रू फॉल्स के लिए डबल, रियल नंबर्स के लिए रियल नहीं होता है, और स्ट्रिंग होता है वो मैसेज वाला चीज के लिए। ओके। तो अब मैं आगे जाता हूँ। तो एक और पोल होगा एक्चुअली अभी, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सोच का आंसर करना। पोल खोल दिया, कर दो। ओ ओ ओ ओ, नाइस। थोड़ा सोच का आंसर करो ये। तो ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्या परसेंटेज है। तो विच इज नॉट अ डाटा टाइप में, इंट में बोल रहे 48 और इसमें बोल रहे 51, तो इक्वल इक्वल चल रहा है। ठीक है, मान लिया। तो देखो क्या होता है,
हम्म यहाँ पे देखो, ठीक है। मैं अच्छे से जूम किया, तुम लोग देख पा रहे हो सब। INT, आई कैपिटल है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। तो मैं अब करता हूँ, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करके देखता हूँ, स्मॉल में नहीं चलता। ये सब कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स फिक्स्ड होता है। और जो फिक्स्ड होते हैं उसको ऐसे लिखना पड़ता है जैसे डिफाइंड है। तो जो इंट हो गया, डबल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सब चीजें, जो पहला लेटर है ना, ये कैपिटल होगा। जैसा वेर और वेल था, वेर को मैं वी को मैं कैपिटल कर दिया, देखो डिफाइन वो ले नहीं पा रहा है, वो ले नहीं पा रहे, इसमें एरर फेंक दिया। तो वी को स्मॉल ही करना पड़ेगा। तो ये चीज ठीक है, प्रैक्टिस के साथ हो ही जाएगा तुम लोग को। तो हाँ, इंटीजर में ये जो कैपिटल आई है, कैपिटल INT इज वैलिड, स्मॉल और एनीथिंग एल्स इज नॉट वैलिड। ओके, तो अभी मैं इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। जनरली हम लोग जब कोड करते हैं, देखो पहले क्या होता है, कोड करते हैं, ये लाइन नंबर 1 मास वाला, ये लाइन नंबर 2 एक्सेलरेशन वाला, ये लाइन नंबर 3 फोर्स वाला, और ये लाइन नंबर 4 प्रिंट वाला। ठीक है, तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, जनरली ना सब ऊपर से नीचे तक सिक्वेंशली चलता है। इसके ऊपर रन कर लेता हूँ। हाँ, सब सही है ना। हाँ, सब सीक्वेंसली चलते हैं, जैसे वन, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। लेकिन कुछ ऐसा स्टेटमेंट्स होता है जो इस सीक्वेंसली नहीं चलाता, वो अपने डिसीजन के ऊपर या लूपिंग के ऊपर, अब कंडीशन के ऊपर रन करता है, जिसका यूज बहुत है प्रोग्रामिंग में। वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में होता है इफ एल्स। ठीक है, मैं अब तुम लोगों को बताता हूँ इफ एल्स क्या होता है, कोड के थ्रू बताता हूँ। इफ ट्रू, ठीक है, इफ ट्रू तो प्रिंटलन इफ ब्लॉक, एल्स प्रिंटलन, इफ अगर ट्रू तो प्रिंटलन इफ ब्लॉक, एल्स एल्स ब्लॉक। ठीक है, तो कब कौन सा चलेगा, इन दोनों में से बस एक ही चलता है। यहाँ पे जो होता है ना, ये इफ के ब्रैकेट में जो लिखा है ना, यहाँ पे कंडीशन डालना पड़ता है। ठीक है, अगर कंडीशन में जो भी अगर ट्रू हो गया, तो इफ के अंदर जो है तो वो चलेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स के अंदर है तो वो चलेगा। ठीक है, सो आई एम मेकिंग दिस कंडीशन, हार्ड कोडिंग दिस इज ट्रू। And if you are wondering what is true and false, remember boolean, same thing. Boolean is used for this purpose only, for evaluating true or false. This is also boolean, you can say that. So this is true, right? So if block, this is run, and if I make this false, then else block, this runs. Now this now how to tell this programmatically? Let's take some numbers. 4 greater than 2. 4 greater than true. 4 greater than 2. This is true or false? You will all know that this is true. In this is true, so println this will run. Okay, just to show you, if block. And let's suppose some other things like 4 less than 3. Is 4 less than equal to 3? It's not, right? Then else will block, else block. Okay. Hmm. So let me just show you in the slide. If score less than 20, then println low. If else if score less than 70, println medium, or else println high. So can you understand? If the score is less than 20, then it will be print as low. If the score is between 20 or 70, then it will be medium. And if it is greater than 70, then it will be high. Okay. So let me just run it only. Code int
So if and else is two blocks. If we want more than two blocks, we can use else if. Else if score less than 70, interval medium, and else it will be high. Notice one thing, only one of these blocks will perform. So if this if block is performed, this both will won't be checked. If this block will perform, then this block will not be checked. So अगर किसी ने किसी पे मैच कर जाते हैं तो उसके अंदर चले जाते हैं एंड उसके नीचे के कोई ब्लॉक्स पे चलता नहीं है. ओके, सो मान लो अगर स्कोर इज 70. ओके, सो नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट. This is the score. The score is 70. Okay, so now what will be the output? Is it low, it will be medium, or it will be high? समझ के आंसर करना थोड़ा ट्रिकी है. I will wait for 10 seconds. So majority is selected high because score less than 70. When less than 70, it will be medium. Not equal to 70. Equal to 70, it comes in the high block. So yeah, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो. Yeah, really proud of you guys. So मैं इसको delete कर देता हूँ. And similar to if else, एक और चीज होता है when. तो यहाँ पे when statement में अगर तुम 0 डालोगे तो a वाला चीज चलेगा. when में अगर तुम 1 डालोगे तो a वाला move next चलेगा. when में अगर तुम 2 x में अगर 2 पुट करोगे तो skip turn चलेगा. a c और c प्लस में उसमें इसको skip switch statement बोलते हैं. In Kotlin it is referred to as when statement. All right, so now moving ahead, there are a few operators. This is equal to operator, this is equal equal, it's not equal. Wait, let me present it. This is the assignment operator. When you use this, when you want to assign variables to values, so maybe 5 equal what, maybe variable abc equal to 2. This is equality operator, not equal to operator. When you want to check two variables, that's num1 and num2, num1 equal to num2 or num1 not equal to num2, this all results in true or false. अगर 4 इक्वल टू 4 है तो मतलब ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है. ऐसे कंपैरिजन ऑपरेटर, ए भी फिर से दो वैल्यूज में चलता है. ए बी एबीसी ग्रेटर देन इक्वल टू सी डी, ऐसे करके ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू. लास्ट वाला चीज है एंड और नॉट. एंड क्या होता है मैं कोड के थ्रू समझाता हूँ. स्कोर नहीं, अब नम ले लेता हूँ, ये हार्ड कोड करता हूँ. इफ एल्स फोर लेस देन 10 एंड 10 लेस देन 20. इसका मतलब क्या है, ये भी अगर ट्रू हो एंड ये भी अगर ट्रू हो तभी जाके ये वाले इफ में चलेगा. ये मतलब एंड, दिस स्टैंड्स फॉर एंड. ओके, so 4 less than 10, yes true. 10 less than 20, yes true. If both are true, then only it will work. So let me run it. You know this, both are true, 4 is less than 10 and 10 is less than 20, then only it will work. What about or? Then another example of and 10 greater than 20. So now is 10 greater than 20? False, right? So if one of them is false, this else will learn. For you, you can see that else block. And what if this or operator? This operator means if any one of them is true, then it will work. So 4 less than 10 is true. So it don't check this 10 greater than 20 or not. किसी एक को सिर्फ ट्रू होना है तो if चल जाएगा. तो एक ट्रू है तो if चल गया. Okay, so this is how and or and operator and or operator works.
सो एक क्वेश्चन है, पोल करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, तब जाके तुम लोग को बताना पड़ेगा ये दोनों इक्वल है कि नॉट इक्वल है। मैं पोल क्रिएट कर लेता हूँ। तो जाके पोल में आंसर कर दो। कर दिया तो 64%, 60% बोलते हैं नॉट इक्वल, 34% बोलते एरर। नाउ दैट्स गुड। Oh, errors decreasing. So now 70% not equal, 30% error. Huh. So now let's see what it happens. See, it's an error actually. It's not equal not. And why? Assignments are not expressions, and only expressions are allowed in the context. I will understand why. I have assigned num1 equal to num2 and not equal to. Okay. So num1 equal to num2, what it does? It does assignment operator. It doesn't compare. For comparison, you have to do equal to equal to. For single equal to, it is referred to as assignment, and which in Kotlin it turns as error. In C or C++, it doesn't turn as an error. It will turn in either of if or else block, and that's more frustrating. You will understand why when you will learn C or C++ in the college course. Okay. For this purpose, now when I'm doing num1 equal to num2, then you are right. It will be not equal. Okay. If we are getting now, let's move ahead. नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी लूपिंग। तो याद है बचपन में हम लोग को जब कुछ गलती करते थे, हम लोग को बोलता था कि एक ही चीज को 100 बार लिख के लाओ, कि आई वांट टू इट अगेन, आई वांट टू इट अगेन, आई वांट टू इट अगेन। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, एक ही चीज को 100 बार लिखा, तो प्रोग्राम में भी क्या कर सकते हो, 100 लाइन्स लिख सकते हो एक ही चीज को लिखने के लिए, या फिर क्या कर सकते हो, एक लूपिंग लगा सकते हो। तो मैं अभी बताता हूँ लूपिंग कैसे लगाते हैं। ठीक है, मान लो लूपिंग कब लगाते हैं, when there is a sequence repetition. The sequence repetition means that 1, 2, 3, 4, 5. This is a sequence repetition. Another sequence repetition is 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11. This is a sequence repetition. There is a sequentially there something is repeating. Okay, it is increasing by 2. You can also form decreasing also, 10, 9, 8, 7, and so on. This is a sequence repetition. So whenever you see a sequence repetition, just use a looping statement. And how to use a looping statement, just let me know. I am telling you. For I iterator in 1 dot 10, print println iterator. Let me make this 5. Okay, I'm running it. So what actually does is 1 dot 5, it actually takes a list of 1, 2, 3, 4, 5. Now this iterator actually moves in this 1, 2, 3, 4, 5 step by step, and for each item, this statement is worked. Okay. Now let me put this step 2. What it actually does is it will increase the value by 2. So it will be now 1, 3, 5, not 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And also you can have reverse order like 5 down to 1. So this 5, 4, 3, 2, 1. And if you now write step 2,
So it will be 531. 531. Okay, clear? So this is how this looping actually works. Let me see. Yeah. After this looping, wait. So you all understand looping, right? Remove these statements. This item in 1 dot 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 10. What will do in general? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So it will print. There is a print statement here. So it will print 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But if you but I have written some statements like item equal to 3 continue and item equal to 6 break. Now what this statements does it, when there is a word continue in a loop, it will actually skip the current iteration and go to the next iteration. Okay, so suppose I am in the iteration 2 and I got the continue anywhere. If there is a something like continue, then it will skip the current iteration and go to the next iteration. And for the break, if I am encountering break in the for loop, then it will go out of this looping statement. Okay, so tell me what will be the answer of this. I will create a poll. Output. Okay, so just a minute. This is a tricky question, so please be very careful while answering this. I launch the poll. This is the question. I am zooming it. Right, please answer it. For explanation, when item equal to 3, there is a continue statement. When item equal to 6, there is a break statement. So just take your time and answer it. Try to answer it. Okay, shall I go and visit the answer? Just take your time. Okay, let's see what you have done. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no one. Great. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28%. 1, 2, 3, 4, 5, 15%. 1, 2, 4, 5, 41%. 1, 2, 4, 5, 6, 15%. So this 1, 2, 4, 5, 40%, that's the maximum, and that's the correct answer. Now let me tell you how. Okay, somebody asked for the link. Wait, let me put the link. Huh. So you can see this item in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, when item becomes 1, it goes inside. It encounters any of them? No. So print becomes 1. After that, 2, it encounters any of them? No. Then print becomes 2. Then item becomes 3. It encounters any of them? Yes. This at wait. This item encounters this continue. Okay. So now what it happens, it actually skips this part and go to the next iteration, that is 4. So this print statement isn't be executed. So 1, 2, there is no 3. Okay. Now 4. 4 is it any matching? No matching. It will print 4. So 1, 2, 4. Then 5. No matching. No matching. 1, 2, 4, 5. Then 6. Matching here. No. Matching here. Break. Now what does this break do? It will go out of this looping statement. So the final answer will be 1, 2, 4, 5. So really cheers to those who have got it on the first move. For those who didn't, it's not a problem. It was a hard thing, and you will understand it step by step. Okay. So now moving at majority of the programming steps we did so far. Now there is something like functions. Now let's come back to what are functions. Okay. Okay. Let me go there only.
So what are functions? So these functions can be done for any purposes like मुझे कुछ भी चाहिए, पर्टिकुलर काम कराना चाहिए, उसके लिए मैं एक फंक्शन खोल दिया। तो मान लो मैं पहले वेरिएबल्स डिफाइन करता हूँ, ए एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसका दे दिया मैंने 8, एंड मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन किया बी, उसको मैंने दे दिया 2। ओके, सब मैं फंक्शन खोल दिया, ठीक है, ऐड किया ए और ए कॉमा बी भेज दिया। ऐसे मैं सबट्रैक्ट का फंक्शन लिख दिया ए कॉमा बी, ऐसे मल्टीप्लाई का भेज दिया ए कॉमा बी, ऐसे डिवीजन का लिखा ए कॉमा बी। ऐसे करके मैं जो लिख रहा हूँ ना, ए एड ए कॉमा बी, सब्ट्रैक्ट ए कॉमा बी, ऐसे करके मैं फंक्शंस खोल रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी फंक्शन पे कॉल कर रहा हूँ। अब कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, मैं सारे तो नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डिवीजन वाला दिखाता हूँ। तो मैं एक फंक्शन में डिफाइन कर लिया ऊपर जाके फन। अब मैं बोला था फंक्शन हमेशा स्टार्ट होते हैं विद द वर्ड फन इन कॉटलिन, फन। फिर क्या आता है, फंक्शन का नाम आएगा विच इज diff इन दिस केस। फिर क्या होता है, जो पैरामीटर्स जो मैं पास कर रहा हूँ, जो ए बी जो मैं पास कर, इसको मुझे कैच करना है। तो मैं इसको कैच कर लेता हूँ ऐसे करके, ए को मैं ऐसे कैच कर लिया और बी को मैं ऐसे कैच कर लिया, ठीक है। और फिर मैं फंक्शन को ब्रैकेट्स खोल दिया। अब मैं यहाँ पे जाके अपना कंप्यूटेशन कर सकता हूँ, फिर मैं रिटर्न कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, डिवीजन करना है, तो मैंने रिटर्न कर दिया ए डिवाइडेड बाई बी। ओके, ठीक है ना। और फिर मैंने इस जो रिटर्न जो किया ना, रिटर्न का भी एक जो टाइप होता है, वो टाइप को मुझे स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो टाइप क्या होगा, इस केस में डबल होगा, क्योंकि डिविजन बाई टू 3.5, अगर मतलब ए 7 होता तो 7/2 3.5 होता ना। तो ए करता हूँ, तो मतलब ए बाई बी, तो मैं भेज दिया। और जो रिटर्न टाइप है ना, इसको मैं एक अलग से वेरिएबल में कैच कर लिया, वेरिएबल सी जो डबल होगा, उसको मैं कैच कर लिया। तो फिर मैंने इसको जाके प्रिंट कर दिया। अब मैं इसका कोड रन करके देखता हूँ। वेट, अच्छा, इसको जाके कास्ट करना पड़ेगा, फिर ही जाके होगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, अभी इस सबको डबल डबल कर देता हूँ, कास्टिंग अभी नहीं सीखा था। मैं सबको डबल कर दिया, तो डबल बाई डबल भी होगा। और पहले क्या हो रहा था, पहले इंट बाई इंट डबल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो कन्वर्ट बाद में सिखा दूंगा। तो अभी देखो 8.0 2.0, उसको डिवाइड किया 4.0 आ गया, ठीक है। तो फंक्शन का काम होता है ऐसे ही कि मैंने कुछ भी काम करने के लिए एक फंक्शन खोला, उसमें पैरामीटर्स पास करना पड़ता है विच इज ए एंड बी इन दिस केस, उसमें एक रिटर्न टाइप करना पड़ता है, और उस फंक्शन में जाके कुछ भी अपना काम करो, और फिर जो चीज को रिटर्न करना है उसको रिटर्न कर दो, यही होता है फंक्शन का काम। बट मान लो कुछ मैं 8/0 पास कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, एरर आना चाहिए ना। तो ऐसा हो गया। तो कॉटलिन में ना एक बढ़िया चीज है, ट्राई कैच बोल के होता है। तो मैं ट्राई कैच को खोलता हूँ। ये C++ में नहीं है, ये जावा में है, पाइथन का मेरा आइडिया नहीं है। मैं दिखाता हूँ क्या होता है, क्या होता है एक्चुअली इसमें। तो ये देखो 8/0 में मैं इसमें ट्राई कैच, मैं ट्राई में ऐसा चीज पास करूंगा जिससे मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो वो वाला चीज मैं ट्राई के अंदर डाल दिया, ठीक है। जैसे इस केस में बाई जीरो। तो अगर कभी पे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो अब एरर नहीं फेंकेगा, इस कैच ब्लॉक में आ जाएगा। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ट्राई कैच। तो अब मैं क्या करता हूँ, कैच ब्लॉक में ये कर देता हूँ। अब और क्या हुआ फिर से, वेट, प्रॉब्लम। ओके सॉरी। हाँ, तो इसको मुझे वो इंटीजर ले जाता है एक्चुअली, 0.0 करना पड़ता है, फिर ही जाकर डबल होता है, ठीक है। तो अब जाके क्या होगा, कोई एरर नहीं फेंकेगा, मतलब डिवाइड बाई जीरो करने पे एक्सेप्शन ब्लॉक पे आ जाएगा एंड प्रोग्राम रन करेगा। जैसे यहाँ पे ऐसा एक्सेप्शन ब्लॉक पे आ रहा है। ओके सो रिटर्न एक्चुअली वो होता है, रिटर्न एक कीवर्ड होता है, जो भी तुम फंक्शन से जो तुम
फंक्शन से जो भी तुम चीज पास करना चाहते हो, जहां से फंक्शन कॉल हो रहा है, अगर तुम कुछ वैल्यू या डेटा पास करना चाहते हो, वो वाला चीज रिटर्न से पास होते हैं। जैसे मैं ये ए बाई बी का जो वैल्यू है मैं पास करना चाहता था, जहाँ पे मैं कॉल हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो ऐसे करके मैं ये पास करने के लिए रिटर्न यूज करते हैं। तो रिटर्न का काम ये होता है। ओके। तो अब जाके ये जो ट्राई कैच वाला चीज है ना, ये एंड्रॉइड डेवलपमेंट में बहुत लगता है। कभी कभी हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग को पता नहीं चलता कि इसमें कुछ एरर आएगा कि नहीं आएगा। एरर आएगा तो क्या एरर आएगा। तो हम लोग जब भी अनश्योर रहते हैं ना कुछ चीज के लिए, तो उस चीज को हम लोग ट्राई के अंदर डाल देते हैं। ओके। और फिर कैच करते हैं एक्सेप्शन करके, और फिर हम लोग वो एक्सेप्शन को प्रिंट करा देते हैं, मतलब एक्सेप्शन की जो प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो ये करने के लिए मैं अब जब रन करूंगा। ओके। वेट। मैं इसको नॉर्मल करता हूँ। ये डिवीजन डबल में एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी रिटर्न कर रहा है, इसमें एरर नहीं दे रहा है एक्चुअली उन लोग। तो मैं यहाँ पे अगर नॉर्मल इंटीजर में करूँ ना, तब एरर आएगा। तो ये देखो, मैं ये वाला यहाँ पे एक्सेप्शन डॉट पिन स्टैक ट्रेस करके रखा हूँ ना, इससे मुझे वो चीज आ जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे जो लिखा आ रहा है बाई जीरो, तो एक काम करते हैं ट्राई कैच। तो हम लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट जब भी करते हैं तो ट्राई कैच से करते हैं, तो यहाँ पे पूरा स्टैक ट्रेस दे देता है कि कहाँ कहाँ मेरा क्या क्या प्रॉब्लम है। एंड मेनली हम लोग को पहला लाइन पे जरूरत पड़ता है, और फिर दूसरा लाइन पे नंबर पॉइंट कर देते हैं कि इस वाले लाइन पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग डिबग करते हैं कोई भी चीज को। ठीक है। तो आज के लिए मतलब कॉटलिन के इतना ही पढ़ते हैं, और फिर आगे जाके एंड्रॉइड का देख लेते हैं आज का थोड़ा थोड़ा सा। एंड्रॉइड का स्टार्टिंग। तो फर्स्ट अब पाथवे टू में एंड्रॉइड स्टूडियो को बेसिक इंस्टॉलेशन बोलेगा, बताएगा। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए हम लोग को दो चीज इंस्टॉल करना पड़ता है। एक है जेडीके, एंड दूसरा चीज है एंड्रॉइड स्टूडियो की एंड्रॉइड स्टूडियो। तो ये जो जेडीके है, इसको हम लोग को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। ये जो मैं इसमें जाता हूँ, फिर इसमें जिसका लिनक्स है लिनक्स में कर लेना, किसका मैक है मैक में कर लेना, फिर इसका विंडोज है विंडोज वाला डाउनलोड कर लेना। और फिर एंड्रॉइड स्टूडियो यहाँ से डाउनलोड, एंड्रॉइड स्टूडियो आएगा यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं एक चीज दिखाना चाहता, this Windows, the minimum required is 4 GB RAM and 8 GB recommended. And for Linux, also the same, 4 GB RAM minimum and 8 GB RAM recommended. So make sure you are having a good computer which can support this Android Studio, because it's a very high tech software. And for the space, it requires 4 GB of your hard disk. Okay. So this installation steps, I won't show you the installation steps. What I am doing is I will link you to the YouTube videos. I will share you these links at the end of the session. You can just follow those YouTube videos and can do the steps on your own. Next, the basics of Android. I'm just starting a project and I will show you the layouts and the view layouts. So I'm just closing this for now. There won't be a poll today after this. So let me show you Android Studio. So this is, I am starting the Android Studio from shortcut icon. So it's a very heavy software. So then we'll see how much time it takes actually. Okay, it's taking time. Just be here for a moment. Anyone want to go washroom? They can go now because it will take 1 to 2 minutes actually.
So I'm giving a break of 2 to 3 minutes. If you want to leave, you can leave. I will be resuming again at 18:15. Okay, it's 18:13 now. So actually, this is the reason I'm telling you to take a high quality laptop, because it's a very hard software, and it actually takes times to open and build stuff and like that. And actually, I'm now sharing this thing with with the teams, right? So it's taking more time, more amount of time to load actually. So yeah, it's loaded. I will just wait for 1 more minute, and I will start from 18:15. Okay, just close all these things. Great, it's being loaded now. So this is the screen actually when you open the Android Studio. Now, okay, I'm just starting. So actually in Android Studio there are so many things, and 1.5 साल हो गया मुझे करते हुए, मुझे आज भी बहुत सारी चीजों का मतलब पता नहीं कहाँ से क्या क्या होता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज होता है ना, तो पहले मैं वही दिखाता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ओपन दिस प्रोजेक्ट सेक्शन एट दिस बटन, दिस इज राइट। आई कैन जूम दिस एक्चुअली, सो प्लीज तुम लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। प्रोजेक्ट को खोलते ही यहाँ पे कुछ चीजें दिखेगा, ठीक है। एक चीज होता है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट। मैं मैनिफेस्ट को खोला, जैसे इन कॉटलिन फंक्शंस everything begins from main, right? Android manifest is something like that. It actually compiles and provides information of everything we're doing in this application, every activities and everything which are present in this present in our application is being referred from here only. So first it will be referred from here only. So जैसे लेवल, जो ऐप का जो एप्लीकेशन को नाम आते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। जो आइकन आते हैं, जो आइकन यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो लेबल होता है, लेबल यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जो एक्टिविटी होता है, वो सारे एक्टिविटीज का लिस्ट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो देखा जाए तो ग्रेडल होता है। ग्रेडल क्या करता है, वो पूरा ग्रेडल कंपाइल करते हैं प्रोजेक्ट को एंड एपीके में कन्वर्ट करता है। जो हम लोग कोड करते हैं वो हाई लेवल में करते हैं, उसको पूरा एपीके में ट्रांसफॉर्मेशन का काम ग्रेडल का होता है। एंड ग्रेडल में बहुत सारी चीजें तुम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जैसे तुम एसडी के वर्जन मेंशन कर सकते हो। ये क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। इसमें तुम डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हो। डिपेंडेंसीज यानी अगर हम लोग के प्रोजेक्ट में कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करना चाहता हो, जो लाइब्रेरीज हम लोग सी प्लस प्लस में इंक्लूड करते हैं ना, ऐसे ही मान लो इसमें हम लोग इसमें करते हैं इम्प्लीमेंटेशन करके, इसमें लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं इसमें, ऐसे करके। क्या क्या लाइब्रेरी यूज करते हैं ये सब बाद में सीखेंगे, अभी के लिए उतना बस मान लो जो जो लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं हम लोग यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट चीज मैं जो पहले चीज दिखाना चाहता हूँ वो है हाउ टू मेक अ न्यू प्रोजेक्ट। सो फाइल में जाना, न्यू में जाना, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएगा, ठीक है। ये ऑप्शंस होगा, जो पहला एक्टिविटी बनेगा वो दिखने में कैसा होगा। तो अगर तुम एक जैसे इसमें गूगल मैप्स है, तो अगर तुम गूगल मैप्स यूज करोगे तो इट विल गिव यू द एक्टिविटी ऑफ अ गूगल मैप लेआउट। so it will actually reduce the work. So there are plenty of things. So what you're going to select is empty activity. You're going to select that only. After that, next, then I have to provide a name to my application. Provide a name, let's suppose first application. Then there is a package name. जब तुम प्ले स्टोर पे पब्लिश करोगे तो वो यूनिकली पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। तो जो यूनिक जो नेम से जो पब्लिश होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड,
तो वो वाला चीज को यहाँ से पैकेज नेम से वो डिनोट करते हैं। तो ये यूनिक होना चाहिए। तो जब भी प्रोवाइड करो तो बहुत से यूनिक प्रोवाइड करो ताकि किसी का मैच ना हो। और फिर ये वाला प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव होना चाहिए, वो सेव का लोकेशन तुम अपना सिलेक्ट कर लेना। लैंग्वेज कॉटलिन या जावा, कॉटलिन सिलेक्ट करना। एंड नेक्स्ट थिंग इज एपीआई लेवल। एपीआई लेवल क्या होता है? जैसे तुम लोग अभी यूज करते हो ना ओडियो पाई, अभी मार्केट में आर आ गया, एंड्रॉइड वर्जन 10+ आ गया। तो ये सब वर्जन होता है। जितना पहले की वर्जन में जाओगे उतना कम फीचर्स मिलेगा। जैसे गूगल मैप्स वाला चीज एपीआई 23 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके पहले अगर तुम यूज करोगे तो उसमें नहीं होगा, मतलब उसमें गूगल मैप्स नहीं मिलेगा। तो तुम लोग बोलोगे सबसे लेटेस्ट वाला क्यों नहीं सिलेक्ट कर ले? तो मैं ठीक है, मैं कर लेता एपीआई 30 वाला। लेकिन एपीआई 30 में देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, योर ऐप विल रन ऑन लेस देन 1% ऑफ द होल वर्ल्ड डिवाइसेस। तो पूरे वर्ल्ड में बस 1% के पास ही ये एपीआई 30 का है। उसके भी 1% से भी कम है। तो एकदम पुराना जाओगे तो अभी एपीआई 14 आ गया है। तो एपीआई 14 तो मतलब 100% जितना भी डिवाइसेस है सब में चल जाएगा। तो कुछ बीच में रखते हैं, आई थिंक 23 इज प्रेफर्ड, विच इज मार्शमेलो आई थिंक। हाँ, एंड्रॉइड 6.0 मार्च को लो, इट इज प्रेफर्ड। तो यही करने के बाद फिनिश करके ओपन कर लेना। मैं अभी ओपन नहीं करता, ओपन करने के बाद यही आएगा, ए स्क्रीन आएगा। ए स्क्रीन को मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ क्या क्या आएगा। एक आता है मेन एक्टिविटी, एक आता है एक्टिविटी मेन। ये दोनों ना रिलेटेड होता है, एक साथ जुड़ा रहता है। जैसे मेन एक्टिविटी जो होता है वो मैनिफेस्ट में मेंशन रहता है। ये देखो मेन एक्टिविटी यहाँ पे मेंशन है। और मेन एक्टिविटी का अंतर, दिस एक्टिविटी मेन इज मेंशन्ड। सो क्या होता है, एक्टिविटी मेन जो एक स्क्रीन होता है, मतलब स्क्रीन मान लो। जो स्क्रीन में एक्टिविटी मेन में क्या करेंगे, हम लोग स्क्रीन का डिजाइन करेंगे। और उस स्क्रीन में जो फंक्शनलिटीज होगा, जो कोड, जो बैक में जो कोड चलेगा, वो कोड हम लोग कॉटलिन में मेन एक्टिविटी की जो मेन एक्टिविटी डॉट केटी है इसमें लिखेंगे। ओके। तो अभी के लिए, आज के लिए बहुत ही स्टार्टिंग से सिंपल सिंपल सा देखते हैं कि डिजाइन कैसे करते हैं। डिजाइन के लिए एक्टिविटी मेन में जाना पड़ता है। तो डिजाइन ये होता है ना, एक्सएमएल लैंग्वेज से होता है, ठीक है। ये जो एक्सएमएल लैंग्वेज से होता है। तो मैं अगले वाले दिन जो सेकंड सेशन होगा उसमें मैं बताऊंगा कैसे एक्सएमएल से कैसे क्रिएट करते हैं। आज इतना बता देता हूँ कैसे डिजाइन, यहाँ पे डिजाइन के लेआउट भी है। ये एंड्रॉइड आईडी के फीचर है कि मैं पूरा डिजाइन करके भी तुम बना सकते हो, तुम्हें कोड लिखने की जरूरत नहीं है फॉर डिजाइनिंग पर्पस। तो यहाँ पे तुम हेलो वर्ल्ड देख रहे हो। ये हेलो वर्ल्ड मतलब जैसे कॉटलिन का हेलो वर्ल्ड दिखाते हैं, एक लाइन का है। ये एंड्रॉइड वर्जन का हेलो वर्ल्ड मान लो। तो इसमें क्या होता है, एक लेआउट है, कांस्टेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट के साथ एक टेक्स्ट व्यू जुड़ा है। टेक्स्ट व्यू क्या होता है, जिसमें टेक्स्ट डाला रहता है। ओके। मैं इसको उड़ा देता हूँ, मैं नया लाता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पैलेट। ये पैलेट में बहुत सारी चीजें हैं। तुम एक एक करके सब एक्सप्लोर करना। मैं जो बहुत ही कॉमन होता है वो टेक्स्ट व्यू होता है, बटन होता है, बटन क्लिक करने के लिए बटन होता है, इमेज भी होता है, इमेज व्यू देखने के लिए, इमेज देखने के लिए। एंड और एक होता है एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट मतलब कुछ इनपुट डालने के लिए। ओके। तो टेक्स्ट व्यू को लेके आता हूँ। टेक्स्ट बुक लेके आ गया। देखो यहाँ पे आ रहा है। सॉरी गाइस, मैं जूम नहीं कर पाऊंगा इसको, तो तुम काम चला लो। एंड अगले दिन से अगर हो सके तो लैपटॉप से ज्वाइन करना, जो मोबाइल से किया हो। जो लैपटॉप से ज्वाइन किया हो, उसको तो दिखना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये एडिट टेक्स्ट व्यू को लाने के बाद हुआ है। अब मैं उसको पोजीशन करना चाहता हूँ, तो पोजीशन कैसे होता है, ये बोला मैं की को पकड़ता हूँ। इसको मैं पी को पकड़ के, मैं ये देखो एरो है ना, इसको मैं जाके यहाँ पे सिलेक्ट करता। अब सॉरी, इसमें सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे राइट में जाके कंस्ट्रेंट हो गया। अब मैं जाके इसको भी आके लेफ्ट में सिलेक्ट करता हूँ। तो क्या हो गया, ये क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजेंटल में मिडिल पोजीशन में आ जाएगा। ये पूरा हॉरिजेंटल है ना, इसका मिड पोजीशन में आ गया। अब वर्टिकल का भी मिड पोजीशन में आना चाहते हो, तो इसको लेके ये नीचे खींच दो। एंड इसको भी लेके नीचे खींच दो। तो पूरे दोनों का भी सेंटर पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके ये पोजिशन होता है चीजें। इसमें टेक्स्ट है, अभी के लिए टेक्स्ट भी डाला है। तो मैं करता हूँ, मैं लिखता हूँ एंड्रॉइड स्टडी जैम्स लिखता हूँ, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया। तो अभी तो दिख नहीं रहा ऑब्वियसली। तो मैं इसको साइज बढ़ाता हूँ। तो इसके जो टेक्स्ट भी होता है ना, इसके इतने सारे एट्रीब्यूट्स रहते हैं, इतने सारे एट्रीब्यूट्स रहते हैं। जो काम का जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यहाँ पे थोड़ा रहता है। जो टेक्स्ट साइज है, टेक्स्ट साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ, जैसे मैं 30 SP डाल देता हूँ। तो देखो अब बड़ा हो गया ना, ठीक है। और जाके और क्या क्या कर सकता हूँ।
इसमें फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली में जाके मैं कुछ सैंस सेरिफ मीडियम कर देता हूँ, तो देखो फॉन्ट थोड़ा चेंज हुआ। अब मैं इसमें कलर प्रोवाइड कर सकता हूँ, कलर प्रोवाइड करने के लिए मान लो मैं रेड प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ये देखो रेड कलर हो गया। तो ऐसे करके मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। और क्या क्या होता है, हाँ बोल्ड भी कर सकता हूँ। वेट, इसमें यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है। तो अगर मुझे वो मिले नहीं जो सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ से जाकर मैं सर्च करके देखो, मैं स्टाइल सर्च करना चाहता था, तो स्टाइल करके वेट, ले नहीं रहा। वेट, थोड़ा दिक्कत हुई, मैं देख चेक करता। ओके, स्टाइल नहीं था वो, एक्चुअली था टेक्स्ट स्टाइल। मुझे ये मिल नहीं रहा, मैं तो यहाँ पे कोड से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे कोड में लिखने के लिए ये जो स्प्लिट वर्जन है ना, स्प्लिट वर्जन खोलता हूँ तो मैं यहाँ पे कोड भी लिख सकता हूँ। एंड कोड लिखने के साथ जो जो चेंजेस है ना, जो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो मैं देख भी सकता हूँ। तो मान लो मैं यहाँ पे लिख देता टेक्स्ट स्टाइल एंड्रॉइड, टेक्स्ट स्टाइल कर देता हूँ। ये मुझे वहां से मैं सर्च करने के बाद मिल नहीं रहा था, तो मैं यहाँ इसको तो यहाँ पे कोड के हिसाब से लिख दिया। ठीक है, वहां से भी मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल्ड सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो ये बोल्ड हो गया, दिख रहा है बोल्ड हो गया। तो मैं इसको इटैलिक भी करता हूँ। ठीक है, देखो इटैलिक हो गया। अब मान लो ये यहाँ पे है ना, इसको जाके मैं लेफ्ट कॉर्नर पे लेके आता हूँ। तो डिजाइन के थ्रू ही लेके जाता हूँ, ये जो है इसको मैंने इनिशियली जो कंस्ट्रेंट सेट किया था मैंने उसको डिलीट किया, और फिर जाके इसको कंस्ट्रेंट में सेट कर दिया कि लेफ्ट और टॉप। ओके, चलो अगर कंफ्यूज हो रहा तो मैं फिर से दोबारा शुरू से कर देता हूँ। देखो इनिशियली ऐसे रहता, लेफ्ट को सिलेक्ट करके मैं टॉप पे लगाया, और इसको सिलेक्ट करके इसमें लगाया, तो ये जाके ये लेफ्ट वाला साइड में हो जाएगा। ऑलराइट, अब मैं ये एकदम सटा हुआ है ना बॉर्डर से, इसमें थोड़ा मार्जिन देना चाहता हूँ। तो मार्जिन कैसे दे सकते हो, तो इसमें पहले मार्जिन को मैं, तो मैं मार्जिन देना चाहता हूँ, तो इसमें मार्जिन देखो यहाँ पे वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखो मार्जिन, तो मैं यहाँ पे मार्जिन में 16 dp डाल दूँ, मान लो कुछ, तो यहाँ पे मार्जिन मिल गया। तो आज के लिए तो मतलब इतना ही समझ लो। आगे अगले दिन हम लोग इस एंड्रॉइड को लेआउट में कैसे होते उसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हाउ टू डिजाइन एंड कोड इन एंड्रॉइड। सो wait for a minute, just wait for a minute। हाँ, तो we will be sharing you this PPT, so do go through this PPT, do go through this the basics of the Kotlin we discussed today. And after that there are three pathways I told you na, so at least you can do the first two because first two are done. And for the first two, the first one is, wait, let me show you. Yeah, got it. So I told you that pathway one through three. So one, two, three, all I told you to discuss today. Leave this third one. Do this pathway one and pathway two after this session. Okay. Complete it. Complete the quizzes. And if you're having any problem, do join our Discord server. I'll be available there. If you're having any problem, do ask me doubts. I'll be happy to answer them. So this pathway one and pathway two do complete today. This pathway one is basically based on the basics of Kotlin, and the pathway two is based on installation stuff. And for the installation stuff, I will share you all the links of how to proceed and install this Android Studio and everything. So the homeworks for you would be go through this Kotlin programming, be familiar with what we discussed today, all the for loops, while loop, each and everything, if variables and everything. After that, make sure you have installed it.
and you can run, actually you can open the id. Okay, make sure you install it and you can open the id. After that, come next day, we will discuss next one. We will discuss on next day. So thank you for attending. i hope that you will I hope that you will come next day also, so you can leave now. Thank you. So people are actually asking when will be the next session. We will actually send you the date. I think it will be on 27th or 28th. It's not tomorrow, so you will get ample amount of time to actually do the stuffs. So yeah, so actually go through the Scout Lab 1 and 2, and don't worry about the resources. We will gonna share that soon. And for someone is asking about YouTube channel link, we will be sharing. Please join the Discord server. We will share everything in the Discord and in the mail also. So don't worry anything. And there will be a feedback form also. So please fill the feedback form if possible. Okay. Thank you guys. It was really lovely meeting you. Guna, can you provide Discord server link in the chat box? Yeah, yeah, sure. Just a second. Sure. We'll also be sharing a lot of links with you guys of all the resources and whatever is required by you. So don't worry about that. They will reach you in due time. And I have put the Discord link in the chat box. Also, Santan, there is Yes. one doubt that सर मेरा लैपटॉप पे एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा सो इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव Change laptop. Okay, no alternative for working on Android Studio. There is, I think, Visual Studio IDE also, which supports Android development, but it isn't as good as Android Studio. I think if Android Studio doesn't work on your laptop, there will be many things in the future that won't work on your laptop. So please change your laptop. That would be my suggestion from my side. Yeah, are we going to receive direct mail for next class? Gunnar, can you answer that? Yeah, yeah, you will be getting all your mails like on your mail ID just like you did for this session. All the links and all the resources, everything will be sent via mail. We'll try to put it on Discord and in your WhatsApp groups as well. So don't worry about the resources. Everything is going to reach you. Somebody asks, will there be need to learn Java? Actually, you can learn Java, but if you're doing Android with Kotlin, then there is no need to learn Java. But you can learn Java for your own purposes. For other than Kotlin, Android's purposes also, you can learn it for your own. For Android, no. Will Android Studio work on Apple Silicon architecture? Sorry, Anurag, I don't really know the answer for that. You can ping me on the Discord. I will get to you there itself. Okay. I currently don't have the answer to it. Someone asking Android development or web development. It actually depends on your what you are fascinated with. But I will say that you are in a first year, right? Just explore stuff, explore Android, web, ML, whatever you feel like, and then from second year, whatever you loved it actually, go forward with it. So that's would be my suggestion. Link for quiz. Prefer for Kotlin, Linux or Windows. I think Linux would be better. Android Studio IDE works better in Linux, not in Windows. But in Windows also it works fine. I'm working with Windows only. Yeah, class की recording मिल जाएगा. We'll be uploading it in YouTube channel. Don't worry about that. We'll be sharing all the resources on the Discord, in mail, in WhatsApp. Don't worry about anything. My laptop is Acer Nitro. It is actually 8 GB processor with 4 GB graphics card. It don't have SSD.